Did you Yes, complete your correct. assignment? Yes, sir. हो पाठवले. Okay, okay. तो मैंने कहा था ना कि कंफ्यूजन है। हाँ हाँ हाँ, मिला था हमें मैसेज आपका. We are going to see Coulomb's law once again. Since school time, I guess you already studied Coulomb's law twice, and this is the third time you are going to study it once again. Okay, but before that, uh, we are going to see what we have studied till date. जो previous 6 या 7 lectures हुए थे, उसमें क्या क्या देखा है. The very first point we studied was coordinate systems. Okay, जिसमें देखा कि हाँ, we know Cartesian coordinate system. Then now we know cylindrical coordinate system, and we also know spherical coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट रिप्रेजेंट होता है एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड. इन सिलेंड्रिकल द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज रो फाई जेड, और स्फेरिकल में पॉइंट रिप्रेजेंट होता है आर थीटा फाई. ओके, यहाँ पे सिलेंड्रिकल में रो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और स्फेरिकल में आर ए, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, but why we want to study three different types of coordinate systems. Okay, Cartesian तो समझ में आ जाता है कि okay, to represent a point in the space we require three-dimensional system. But why to go for cylindrical coordinate system and spherical coordinate system? This is because if you look at a wire, let us say we do have xyz coordinates. Okay, and on z axis we have placed a wire, एक wire रख दी है. Okay, now all of us know that if there is a current carrying wire, उसके इर्द गिर्द we do have a field. Okay, उसके surrounding में field होता है, and this field looks like a cylinder. Okay, so to analyze this kind of field where एक long conductor है, okay, and this conductor do have charges on it, या फिर करंट फ्लो हो रहा है. Okay, then to analyze the field around the long conductors we will require cylindrical geometry. Then why to go for spherical geometry? If we have a point charge q, okay, the point charge q will have field around it, और ये जो field है it will be present in all direction. जैसे कि भाई कोई एनर्जी फील्ड है, वो स्फीयर बन गया है पॉइंट चार्ज के अराउंड. तो टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ फील्ड्स we will require a sphere kind of shape. So therefore we will require the spherical coordinate system. Okay, so ये first point we engaged our I guess 3 hours to understand the coordinate systems, and then next hours we engaged to understand the integrals and differential elements. What do you mean by DL? What do you mean by DS? What do you mean by DV? Okay, we are not writing down capital V over here. It is a small v which talks about a very small amount of volume. Throughout our course, small v will represent volume or it will represent velocity. Okay, it will be specified in the statement, and the capital V will be used for voltage throughout our course. Okay, तो ये ध्यान में रखिएगा. Then we have seen the various types of integrals as well, कि भाई line integral होता है, then surface integral होता है, then we do have volume integral. Line integral
is single integration, surface is double integration, and volume is triple integration. Okay, we have solved numerical based on it. Okay? इसमें सिर्फ इंटीग्रल समझने में we have engaged our 2 hours. Okay, then meanwhile we were also discussing about the vectors and scalars. So let us discuss a vector r bar. बाय डेफिनेशन सबको पता है कि भाई वेक्टर क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, so if we say that we have a point A and we have another point B, okay, point A is at coordinates x1, y1, z1, and point B is at coordinates x2, y2, z2. Okay, now there is a question, we will put a question, find vector r bar from A to B. Okay, r bar from A to B मतलब क्या, we will have a line joining the 2 points and this will be associated with a vector r bar whose direction is from A to B. So here A becomes our starting point and B point becomes our destination. Okay, so how we can calculate vector r bar? Vector r bar is equal to x2 minus x1 ax cap plus y2 minus y1 ay cap plus z2 minus z1 az cap. यहाँ पे x2 x1 y2 y1 z2 z1 are the coordinates for our points A and B. The ax, ay and az, these are the unit vectors associated with x, y and z axis. Okay, ax is a unit vector along x axis, ay is a unit vector along y axis and az is a unit vector along z axis. तो ये था r bar. Okay, now if I say that point A is at, let us say for an example, is at 1, 2, 3 and point B is at 4, 5, 3. So what will be vector r bar in this case? It will be x2 minus x1 means 4 minus 1 ax cap plus y2 minus y1, that means 5 minus 2 ay cap plus z2 minus z1 means 3 minus, let us say we will change it to over here 4. Okay, 3 minus 4 az cap. So what is the expression for r bar? It is 3 ax cap plus 3 ay cap minus 1 az cap. Okay, another term which is important when we are dealing with the vectors is its magnitude. Magnitude of r bar. It is indicated as modulus of r bar. Okay, how it is calculated? It has once again a straightforward formula, x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square, and whole expression is in under root. So for our considered example, if we say that we want to find a vector r bar, this is the term x2 minus x1, that means this is 3. So we can write down under root 3 square plus, this is a term which talks about y2 minus y1, that means 3. So once again 3 square plus
3 minus 4 is Z2 minus Z1 and it is nothing but minus 1. So minus 1 bracket square. So 9 plus 9 is 18 plus 1 is equal to 19. Okay, this is the magnitude of vector R. Okay, so we had a vector R going from point A to point B. Okay, A to B. And now we know that we got an expression of R bar, we got an expression of magnitude of R bar, and now this time we want to have an expression for unit vector associated with R bar. Unit vector, it will have the magnitude 1 and its direction is along R bar. Okay, unit vector AR cap, okay, has always magnitude equal to 1 and it is in direction of vector R bar. तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? How we can calculate AR cap? It is nothing but vector R bar upon magnitude of vector R bar. So this is an expression for R bar and this is a magnitude for R bar. So we can write down unit vector has an expression 3ax plus 3ay minus az cap upon root 19. Now in your syllabus, this is very important. Find the vector R bar, find the magnitude of R bar and find the unit vector AR cap. Okay, I will rewrite over here. Find vector R bar, find magnitude of R bar and find unit vector along R bar. Do remember that for finding these three quantities, we will require what is the starting point or source point, and what is destination point. Okay, if we do know what is the starting point, what is the destination point and their coordinates, then finding R bar, finding magnitude of R bar and finding unit vector along R bar will be easy. And throughout unit number 1, unit number 2, unit number 3, you are going to do these stuff repeatedly. Okay, क्या करने वाले हो आप? To solve the numerical, very important thing. This is, I guess, fourth point. Okay, yes, third one was vectors, and now fourth point, very very important. वो आपको थ्रू आउट सिलेबस लगने वाला है. Solve numerical. Do remember that in our syllabus we do have various law. Okay, we do have their associated derivations. Okay, or I will say that application of the law, applications of law, and डिपेंडिंग ऑन जो भी फॉर्मूले बनेंगे, जो भी फॉर्मूले है लॉ में या फिर जो भी फॉर्मूले बनने वाले हैं डेरिवेशन में, यूजिंग दोस फॉर्मूले वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल. यही तीन चीजें हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द लॉ, सेकंड इज its application and some of the derivations, and third is the numerical depending upon the formulae. इतना ही करने वाले हो आप. और जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स. जैसे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वेक्टर आर बार फाइंड किया, तो वहां पे ए और बी के इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता थे, तभी जाके वी कैन कैलकुलेट आर बार and magnitude of R bar and unit vector along R bar.
सेकंड पॉइंट क्या है भाई, दोनों पॉइंट्स तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ आर बार. मतलब क्या, अगर न्यूमेरिकल में बोला है कि भाई फ्रॉम ए टू बी, तो डायरेक्शन आ गया ए टू बी. अगर न्यूमेरिकल में बोला है फ्रॉम बी टू ए, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया. Okay, so we have to decide the direction of r bar. Sometimes I will put down few words. Sometimes we will need to find the direction of perpendicular from destination to source. Very important. Perpendicular from destination to source, and few another times we are going to decide what is the direction of field. Direction of field. मतलब क्या, if we say that okay, I do have a point charge q and it do have a field surrounding it. Okay, ये field जो है point charge के around जो है, it is coming outside the charge. Okay, उसके बाहर निकल रहा है. Okay, and if you observe these lines जो arrow मैंने draw किए हैं, can I say that these lines are along the रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना. ये जो लाइंस ऑफ फोर्स, जो लाइंस ऑफ फील्ड बाहर निकल रही है चार्ज से, विच आर गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ spherical field around the charge, those lines will be along the radius of the sphere. So therefore we call it as radial direction. Okay, radial direction. तो ये हो गई radial direction, and we know that in spherical the radius is represented as r, so radial direction हो गया ar cap. ये जो है ना radial direction, we are going to revisit these words again and again throughout our syllabus. Okay, then third point while solving the numerical is आपको coordinates मिल गए, आपको direction भी मिल गया. Okay, then now you are going to calculate r bar, magnitude of r bar and AR cap. Okay, ये तीसरा हो गया. And the last point, put all values in formula, जो भी formula होगा, and get the answer. Okay, सर हाँ बोला. सर जेव्हा डायरेक्शन डिसाइड करतो तेव्हा x1 y1 x2 मग y2 x1 x2 y1 y2 z1 z2 चे व्हॅल्यूज पण चेंज होतील ना. येस येस येस, कसं असतं मी सांगतो तुम्हाला. वी विल रिविजिट वंस अगेन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. ओके, ये वाला. हाँ, यहाँ पे what was the डायरेक्शन starting point? Okay, yes, what was the starting point A, what was the destination point B. तो ये जो फॉर्मूला लिखते हो आप आर बार का, आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर हियर, आर बार, ये फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? द फॉर्मूला इज डेस्टिनेशन माइनस सोर्स ए एक्स कैप प्लस डेस्टिनेशन माइनस सोर्स ए वाई कैप and plus destination coordinates minus source coordinates az cap. यही मैं नीचे फिर से लिखता हूं, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई. आई विल redraw the same vector once again. कि भाई a point था, then we have b point. okay, यहाँ पे था x1 y1 z1 और यहाँ पे था x2 y2 z2. If we are considering the direction like this from A to B, therefore your vector r bar becomes, what is the destination point? B is the destination point. What is the source point or starting point? A is the starting point.
So destination x2 minus starting point is x1 ax cap plus what is the destination y coordinate y2. What is the starting y coordinate y1 ay cap plus what is the destination z coordinate z2 minus what is the starting point z coordinate z1 az cap. But as soon as we say that, okay, now we have same A and B points, but this time we want to go from B to A. So this time, what is our destination point? A becomes the destination point and B becomes the starting point. So what formula says? Destination minus source हमेशा हमेशा ऐसे ही करना है. तो A के कोऑर्डिनेट्स के थे x1 y1 z1. So x1 minus x2 ax cap plus डेस्टिनेशन का मतलब A का y कोऑर्डिनेट इज y1 और सोर्स का y कोऑर्डिनेट y2 ay cap प्लस डेस्टिनेशन इज पॉइंट A, उसका z कोऑर्डिनेट इज z1, सोर्स कोऑर्डिनेट B, सॉरी सोर्स पॉइंट B और उसका z कोऑर्डिनेट इज z2 az cap. ये इंपॉर्टेंट है. डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, पॉइंट्स कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. याद रखो कि आपका वेक्टर आर बार है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कैसे है. So your formula always talks about destination minus source quantity throughout your syllabus. Make it your muscle memory. Okay. So throughout syllabus, your always coordinates for finding the vectors are destination minus source coordinates. Okay. So let us make this one as 5th point and we will go for 6th point now. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. डेस्टिनेशन माइनस सोर्स वाला जो भी ग्रीन में लिखा है मैंने 5th पॉइंट. यस सर. सबको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. fantastic. Yes, sir. Okay. Now the syllabus says about Coulomb's law. The very first point, the very first time you encountered with Coulomb's law was in 9th standard physics 1. Okay, जहाँ पे आपने Coulomb's law पढ़ा था. A force of interaction, I will say a force of interaction. वो attraction भी हो सकता है या फिर repulsion भी हो सकता है depending upon the charges. Okay, the force of interaction in between two charges is expressed as q1 q2 upon 4 pi epsilon 0 r square into ar cap. Okay, ar cap मतलब we are talking about the vector, we are also talking about the direction. Okay, ये फॉर्मूला बना कैसे? जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था आपको, these are not mathematically driven formulae, these are experimental formulae. मतलब क्या कि जो कूलम्स था भाई, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया q1 q2 एंड ही ट्राइड टू मेजर द फोर्स. कैसे मेजर किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था, really I cannot talk about those experimental setups, but still what he did, he made an observation table. उन्होंने लिखा कि भाई q1 is +1 let us say microcoulomb, yeah, then +1 microcoulomb, q2 is +1 microcoulomb. He has some sort of force. Okay, then 2 microcoulomb, 1 microcoulomb, another sort of force, कुछ value I, -2 microcoulomb, -2 microcoulomb, another value I, then -3 microcoulomb, +5 microcoulomb, another value I. And after preparing this table, they tried to find कि भाई इनमें रिलेशन क्या है, जैसे मैंने तब एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई इफ A is the input and Y is the output, if input is 2
and y output is 4. If input is 3, y output is 9. We can say that okay, y is equal to a square. सिंपल. तो इन्होंने ऐसे टेबल बनाया एंड ही ट्राई टू पुट इनटू अ फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला ऐसे दिखता है. दीज आर एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलेस. ओके, ये हमेशा पाई 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 इप्सिलॉन 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 क्यों आते हैं? बिकॉज लैटर ऑन मतलब 100 साल के बाद वी फील कि भाई जो फॉर्मूले है ना, इनको एक टर्म्स में लाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज एवरी फॉर्मूला डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट्स. तो यू विल सी दैट लॉट्स ऑफ फॉर्मूले, जो ज्योमेट्री के फॉर्मूले हो गए या फिर फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, एवरी टाइम यू विल हैव दैट पाई कांस्टेंट ओवर देयर. दिस एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल कांस्टेंट. ओके, मटेरियल कांस्टेंट जिसको कहते हैं परमिटिविटी. ओके, मटेरियल चेंज हुआ, परमिटिविटी चेंज हुई. एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ एयर. ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आते हैं. वी हैव टू स्टार्ट विथ दीज फॉर्मूले. we need not to go into how they achieved these formulae. Okay, now another important term about the suffix. जैसे हिमांशु ने भी पूछा था मुझे कि सर ये F2 क्या है, F1 क्या है. Okay, so whenever we say that we do have a charge Q1 and we do have another charge Q2. Okay, and we want to find the force of interaction in between them. Okay, so let us assume we are trying to find force on charge Q2 exerted by charge Q1. Okay, मतलब फोर्स किस पे जा रहा है? फोर्स जा रहा है Q2 पे, ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1. ड्यू टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1. तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एज फोर्स फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 on charge Q2 is expressed as Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R from charge Q1 to charge Q2 R square into AR. R कहां से कहां तक है? चार्ज Q1 से चार्ज Q2 तक. Okay, if we say that this time force on Q1 exerted by Q2, ये मुझे फाइंड करना है. मतलब इस केस में क्या हो गया? नाउ योर डायग्राम डायरेक्शन विल गेट चेंज. ओके, हाउ इट विल लुक लाइक? we do have same system Q1 and Q2 and they do have some force of interaction, but this time the direction of vector R got changed. So it can be expressed as the force on Q1 by Q2. The force on Q1 by Q2. So I will express force due to Q2 on Q1. Okay, due to Q2 on Q1 is expressed as Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 वेक्टर R कहां से कहां तक है? 2 से 1 तक है, R स्क्वायर. ए आर कैप वेक्टर कहां से कहां तक है? Q2 से स्टार्ट हो रहा है, Q1 तक जा रहा है. So have you got the difference in between the notations? The notation suffix uses, I will say that F. Suffix क्या है? Source dot destination. Okay. Another important point. Suffix की बात कर रहे हैं. We are talking about suffix. F12 बार मतलब 1 से 2 की तरफ. F21 बार means 0.2 से 1 की तरफ.
ओके, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपका सफिक्स भी चेंज हो गया. Sometimes in your textbooks, the F12 bar is also written as F2 bar and F21 bar is expressed as F1 bar. Okay, sometimes. But throughout our teaching, we are going to use these notations. Okay, F12 bar and F21 bar. ये इतना लिख लिया है आपने आपकी नोटबुक में? हेलो, आप लोगों ने लिखा? हाँ सर. येस सर, लिहिलंय. हो सर. हाँ सर. ओके, सर लिहिलंय. एखाद्या दिवशी मी गुगली टाकू शकतो. गुगली की भाई अगले 10 मिनट में आपने जो भी नोटबुक में लिखा है उसको अपलोड करो एज एन असाइनमेंट. कोई ना कोई दिन मैं गुगली डालने वाला हूँ, सो प्रिपेयर फॉर दिस. बनवावी लागेल. हो का सर? हो का? यस यस, सीरियसली. अरे सर. तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो मैंने सॉल्व न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में दिया था. वी आर गोइंग टू सी द सेम न्यूमेरिकल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. जहां पे आपको गिवन दिया था, कुछ डेटा गिवन था कि भाई चार्ज Q1 है having 2 millicoulomb and it is located at P1 and its coordinates are -3, 7, -4. So looking at the coordinates, I come to know that okay, this is a Cartesian coordinate system. Fine. Then Q2 is of 5 millicoulomb and it is at point P2 having coordinates 2, 4, -1. Okay. पूछा गया था कि आपको फाइंड करना है F2 bar and F1 bar. Okay. This means we have to find F12 bar and F21 bar. Do remember that whenever the system doesn't change, if system does not change, मतलब क्या? Q1 जैसे के जैसे है, Q2 जैसे के जैसे है, जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट पे है, nothing is going to change, neither their values, neither their coordinates, then always F12 bar is equal to minus F21 bar. Why? Because nothing changes, but only the direction. क्योंकि एक बार वेक्टर R बार ऐसे रहेगा और दूसरी बार वेक्टर R बार ऐसे रहेगा. ओनली डायरेक्शन चेंजेस. और वो माइनस का प्लस हो जाता है, इसकी वजह से यू डू हैव दिस रिलेशन F12 bar is equal to minus F21 bar. This is valid as long as system doesn't changes. Then formula. We know that we have only one formula which talks about the interaction in between the various point charges. Okay, it is nothing but the Coulomb's law, and Coulomb's law says that okay, F12 bar is nothing but Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon naught. yes, R12 square into A R12 cap. ये formula है. Now from this formula we have the value of Q1, we have the value of Q2, we have the value of 4 pi epsilon 0 क्योंकि वो constants है. Okay, what we need to find this quantity R12 square and A R12 cap. Okay, मतलब वही है कि भाई आपको आर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार एंड ए आर कैप बनेंगे. अभी आर बार कैलकुलेट करने के लिए क्या लगेगा? डेस्टिनेशन पॉइंट एज वेल एज सोर्स पॉइंट. यस, परफेक्ट. Source point. तो डू वी हैव? Yes, we do have, Yes, because we have are, yes, we are calculating the interaction in between the two charges Q1 two and charges. Q2. Q1 and Q2. So yes, so we will start with the solution. Solution में सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई we will draw, okay, Q1 है
Q2 है, and we are going to find the interaction in between the two. Let us keep our R bar from charge Q1 to charge Q2. Q1 has a value 2 millicoulomb and Q2 has a value 5 millicoulomb. Whereas Q1 resides at -3, 7, -4 and Q2 resides at 2, 4, -1. Okay. Now straightforward numerical R12 बार कैलकुलेट करना है. तो मतलब क्या? Destination minus source. So this is our destination point and this is our source point. Okay. So we can write down destination x coordinate minus source coordinate x coordinate ax cap plus destination y coordinate minus source y coordinate 7 ay cap plus destination z coordinate minus source z coordinate az cap. Okay, so this is actually 2 plus 3 ax cap plus minus 3 ay cap plus minus 1 plus 4 az cap. This means 5 ax cap minus 3 ay cap plus 3 az cap. ओके, तो शायद अगली बार जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, I am not going to write down this step, I am not going to write down this step, but I will directly write down this step. You have to do these steps in mind. Okay, I am going to skip. So next we are going to calculate the magnitude of R12 bar. So magnitude कैसे? We have an expression of R12 bar. So 5 square plus 3 square plus 3 square. ये यहाँ पे +3 क्यों लिखा? Because we know that ये -3 का ब्रैकेट स्क्वायर किया, ये भी 9 आने वाला है और 3 का ब्रैकेट स्क्वायर किया तो भी 9 ही आने वाला है. Okay, so whenever we are going to square the terms, even if they do have minus sign, their answer will be same. So 9, 9, 18 plus 5, 43. So under root 43. And now we will have the unit vector associated with R12 bar as 5ax cap minus 3ay cap plus 3az cap upon magnitude of R bar is 43. तो भाई अभी आपके पास तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, आपके पास यूनिट वेक्टर भी आ गया, तो पुट दिस वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. सो F12 bar, I will rewrite the formula once again. Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 epsilon naught yes not okay R12 cap. square. Okay, fine. Now we do have all the values available with us. Q1 is of 2 millicoulomb. So I am going to write down small m. Okay, you can write down as it is in the examination as well. You can write down as it is on your calculator. You do have milli sign on your calculator. Then into 5 milli upon 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 is a constant. आप में से 991 ms कैलकुलेटर किसके पास नहीं है? 991 ms. 991 ms वाला म्हणजे ते ब्ल्यू आणि ग्रे वाला का? ज्याच्यावरती कॉन्स्टंट नावाचं बटन नसतं. 991 ms वरती आहे. Why I am asking? Because if you do have 991 ms calculator, then on it you have a button constant और 32 अगर लेते हैं तो आपके डिस्प्ले पे डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0 आ जाता है. अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज उसका वैल्यू 8.852 into 10⁻⁻12. ठीक है, सो यू हैव टू
use the epsilon 0 a lot of time, either memorize its value or you can use your calculator. Okay, अगली टर्म है R12 स्क्वायर, मतलब क्या, ये जो था R12 मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करना है. सो कैन आई राइट डाउन स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 43, ओके, 43 directly. हाँ यस, इनटू AR12 कैप. अभी इसकी वैल्यू लिखेंगे. ओके, सो 5AX कैप माइनस 3AY कैप प्लस 3AZ कैप upon root 43. Okay, now if you compare these two terms, okay, I want to simplify a little. तो ये क्या है, can I say that for this term root 43 square, it is nothing but 43 let us say raised to 2 by 2. Okay, and this 43 is nothing but 43 raised to 1 by 2. Okay, and if you do multiplication of these two terms, can I say that this is nothing but 43 raised to 3 by 2. Okay, Yes, sir. why I can write down this, because we know that if a raised to x into a raised to y, then this is as good as a raised to x plus y. So we know that 2 by 2 into plus 1 by 2 is equal to 3 by 2. तो ये यहाँ पे लिखा. ये 2 by 2 क्यों लिखा? Because we know that if we have under root a, this means this is nothing but a raised to half. और इसका स्क्वायर भी था तो वो स्क्वायर का 2 यहाँ पे आ गया. Okay, well, and lots of things. So we are going to rewrite whatever I have written. 2 milli into 5 milli upon 4 pi epsilon 0 into 43 raised to 3 by 2 into 5AX cap minus 3AY cap plus 3AZ cap. And now this time we are going to solve the first term. Okay, तो इस टर्म को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे, जो भी आएगी, शायद मेरे ख्याल से जब मैंने सॉल्व किया था तो 319.183 ऐसे आई थी. सो 5AX कैप माइनस 3AY कैप प्लस 3AZ कैप, और जो मैंने आंसर आपको असाइनमेंट में दिया था, इट वाज लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. 1.595AX कैप माइनस 0.957 AY कैप प्लस 0.957 AZ कैप. ओके, ये बना आपका F12 bar, and since system doesn't change, we know that F12 bar is equal to minus of F21 bar. So this implies that F21 bar is equal to minus of F12 bar. This means F21 bar is equal to minus 1.595 AX cap plus 0.957 AY cap minus 0.957 AZ cap. Okay, this is the second answer and this is the first answer. Now if you go through the numerical, what we did, this was the first point, decide the coordinates. Then second point, decide the direction of vector r bar. Then third point, find vector r bar, find magnitude of vector r bar and find unit vector. Then we have fourth point. Fourth point क्या था? Put all the values into the formula and get the answer. Bas, this is the only thing we are going to do throughout the syllabus. जैसे अभी आपने you found the force of interaction in between Q1 and Q2. Can I say that Q1 की वजह से Q2 पे कुछ force था? Similarly, if I bring another charge Q3, it will also have force on Q2. तो यहाँ पे आपका force बन गया F12 bar.
यहाँ पे फोर्स बनेगा F32 bar. Then if we bring another charge Q4, it will also exert a force on Q2, तो वो बनेगा F42 bar. If we bring another charge Q5, उसके लिए भी Q2 पे चार्ज आएगा, so that will be represented as F52 bar. Can I say that कि भाई पहले ना मैं F12 बार कैलकुलेट करूंगा, then F32 बार कैलकुलेट करूंगा, then F42 बार, then F52 बार, और इन टोटल अगर मैं कहूं कि भाई सारे चार्जेस की वजह से Q2 पे कितना फोर्स आया, हाउ मच फोर्स, हाउ मच फोर्स ऑन Q2. तो कैन आई से दैट कि भाई ऑन Q2, हेलो, on Q2 we Hello, will, sir. Just yes, 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 I'm sorry to interrupt, but हाँ, sir आपने जो 2 मिली वो है ना 2 मिली एंड 3 मिली, उसका आपने कन्वर्शन किया है क्या? कन्वर्शन नहीं किया वहां पे. लेट मी शो यू. ये वाला बोल रहे हो ना आप, ये 2 मिली, अ, यही हाँ यही सर, पूछ. हाँ सर, हाँ These values are given in numerical. Usually, what you हाँ, did, आपको दिया हुआ है, हाँ, बट सर एक्चुअली क्या है कि आपका जो ये 2m इंटू 5m बाई 4 हाँ, बाई एप्सिलॉन it's, 0 इंटू हाँ, हाँ उसका जो कैलकुलेशन है ना, हाँ, हाँ, उसमें आपने आंसर लिखा है बरो, 319.3. तो बरोबर, बरोबर, अगर हम लोग ऐसा डायरेक्ट वो कैलकुलेट करें ना हाँ, हाँ, कैलकुलेटर में, तो हाँ, हाँ. काफी 37 तो उसमें पॉइंट नहीं है, तो वैसे मैं पूछ रही थी इसमें आपने When I did this calculation, I considered only 2 into 10 raised to minus 3 into 5 into 10 raised to minus 3. That's all. Nothing different. Because I do have a pretty much a old calculator. इस आंसर के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है ना, 319 की जगह पे आपका हाँ, दूसरा आंसर that's आ the रहा है. reason, क्योंकि जो आंसर आया है उसमें पॉइंट ही नहीं है. अच्छा, हाँ, पॉइंट नहीं है. आ, अरे हाँ बाप रे. हाँ हाँ, तो वैसे मैं बोल रही थी कि शायद 2 into 10⁻³ होगा. ठीक है. ठीक, कर लेंगे एक बार चेक. पॉइंट तो आना ही है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इटसेल्फ इज इन पॉइंट. ओके, ठीक है, देखते हैं. So total force on Q2 is nothing but addition of all forces. Addition of all forces. तो ये दिया था आपको मैंने होमवर्क के लिए कि जहां पे आप रिपीटेडली वही 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 सॉल्व करने वाले हो. ओके, तो आज जो आपने पढ़ा, आपने जो सुना, डू यू हैव एनी डाउट इन दैट? नो सर. एवरीवन? ओके. जो मिस्टेक होती है वो सिर्फ फिलहाल के लिए है कि भाई डायरेक्शन मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट और सोर्स पॉइंट कौन सा चूज करना है, एंड डूइंग द कैलकुलेशन वहीं पे मिस्टेक हो सकती है एज लॉन्ग एज योर फॉर्मूला इज करेक्ट. ओके, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत सारे हैं, सो डू a lot of practice. Practice is very important, and that's why I am going to keep you busy in solving the numerical by giving them as an assignment. Okay, that's all for today's session, and we will stop the recording and we will end the session. हेलो.